Hello, dear students. I welcome you to today's class. Children, we are carrying on with this chapter 1, Nationalism in Europe. And in this chapter, in the last class, what we have done, last class we have completed and we were talking about the revolutionaries in different parts of Europe. The major revolutionary who had played a very important role in this revolution was Mazzini, Giuseppe Mazzini. Yes. So, children, what we are talking about is Giuseppe Mazzini. He has founded two secret societies because conservatism was there. Conservatism was established, and in this conservative regime, please try to understand, this conservative regime was giving a tough time to the common people, especially the revolutionaries who were there. They were very sick and tired of all these things that were happening. So they have made up their mind that they would be carrying on their revolution, they would be carrying on their own things in their own manner, and they will not listen to the monarchy. Monarchs were those people who had come to power just on the basis of their birth. Because they are born as a monarch, so they will remain as a monarch all through. This was not approved by many people. Many people said कि monarch है, raja है. That does not mean that they would be harassing the people, they would be troubling the people. किसी न किसी तरीके से हमेशा लोगों को परेशान करना, that was not the correct method. So the revolutionaries had made up their mind, and these all people had come together in the German state, and secret societies were established in Germany, France, Switzerland, Poland. हर जगह पे secret societies were established. These were the societies that had lot of power and lot of impact on the minds of the people in Europe. Now, when the revolutionaries were there, liberal nationalists were there, they belonged to the educated middle class elite, and professors, school teachers, clerks, मतलब ये जो पढ़े लिखे लोग थे ना, majorly the people who were educated, they were carrying on this movement. ठीक है? तो अब ये समझो, because second topic when we have completed, we are moving towards the third topic. We have to understand that how these people were carrying on their movement on such a large scale. इतने बड़े level पे the movements were being carried on, and these movements had lot of impact on the minds of the people. So topic 3 says it was the beginning of the age of revolutions. This was the age of revolutions. 1830 to 1848. 1830 to 1848, these revolutions that were being carried on, conservative tried to consolidate their power. The conservatives who were there, they tried to make themselves very powerful. Liberalism and nationalism, increasingly revolution हो रहे थे. Many places in Europe, revolutions were happening, especially Italian and German states, Ottoman Empire, Ireland, Poland, all these revolutions, कौन कर रहा था ये? Please try to understand. All these revolutions were because the age of revolution had happened. Lot of revolutions had happened. 1830 to 1848 के बीच में. So, who were the people carrying on this revolution? The liberal nationalists belonging to educated middle class. The liberal nationalist belonging to educated middle class ठीक है,
liberal nationalist, educated middle class. They were among whom where they were the middle class elite. क्या होता है ना, व्हेन यू गेट एजुकेटेड, जब आप पढ़ लिख जाते हैं तो आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, आपके थॉट प्रोसेस में चीजें बदल जाती हैं. ओके, एंड द पीपल हु वर बिलोंगिंग टू द अबव क्लास गॉट इट. ये जो लिबरल नेशनलिस्ट वर देयर, दे वर मेजरली प्रोफेसर्स. Professors were there, school teachers, clerks, okay, and members of the commercial middle class. And members of the commercial मिडिल क्लास. पैसा भी कमा रहे थे, पैसे भी आ रहे थे, दिमाग का सोचने की भी तरीका बदलता चला जा रहा था. सो द थॉट प्रोसेस एंड द वे ऑफ थिंकिंग वाज चेंजिंग वेरी फास्ट पेस. बहुत तेजी से ये सारे बदलाव हो रहे थे. सबसे पहला अपहीवल कब हुआ पता है? फ्रांस में. ऑल दीज, ये जितना कुछ भी रेवोल्यूशंस होते थे, एवरी टाइम इट हैपेंड इन फ्रांस. सो द फर्स्ट अपहीवल took place in France in July 1930. It was also called as July Revolution. क्या होता है कि when France was a place, whatever incidents used to happen in France, it had a deep impact on the other parts of the Europe as well. बाकी के यूरोप में भी उसका बहुत असर पड़ता था. सो सम रूलर्स वेर वेरी इरिटेटेड कि कुछ भी फ्रांस में हो रहा है, दैट डज नॉट मीन इट विल हैपन एवरीवेयर इन द यूरोप. सो दिस इज जुलाई रेवोल्यूशन. ओके, अब क्या हुआ? जुलाई रेवोल्यूशन से क्या हुआ? प्रोसेस में देयर वाज बर्बन किंग्स, जो कि who had been into the power during the conservative reaction after 1850, where फिर से they were overthrown. ये जो बर्बन डायनेस्टी थी, they could not take care of themselves. हमेशा रेवोल्यूशन करके उनको कोई ना कोई हटा देता था. तो इससे पता चलता है ना, now you can see that there was some inherent problem in them. कोई भी उनको पसंद नहीं करता था. अगेन व्हाट हैपेंड? जुलाई रेवोल्यूशन में हुआ क्या? बर्बन डायनेस्टी वाज ओवरथ्रोन. इनको हटा दिया गया. एंड they installed a constitutional monarchy. Louis Philippe was its head. फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बना. मोनार्की था, किंग को उन्होंने बिठाया, ऐसा बात नहीं था. इट वॉज नॉट दैट द किंग वॉज नॉट देयर. किंग वॉज मेड देयर एंड दे सेड लुई फिलिप वॉज इट्स हेड. लुई फिलिप वॉज हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. कॉन्स्टिट्यूशनल monarchy. Louis Philippe became the head and he says, अब क्या हुआ? ये सब देख के, you know, Duke Metternich, the Austrian chancellor, conservative head, he said, when France sneezes, the whole of Europe catches cold. क्या फ्रांस में छींकता है? जब फ्रांस ने छींक दिया तो पूरे यूरोप में सर्दी लग जाती है, पूरे यूरोप के लोगों को सर्दी लग जाती है. ठीक है? He was very irritated, so he passed this remark
that when France sneezes, the whole of Europe catches cold. Up, there was July Revolution. इससे क्या हुआ? Brussels, maybe there was revolution, and Belgium break away from the United Kingdom of Netherlands. Remember, Belgium was added to Netherlands when the conservative regime was there. So Belgium was added to Netherlands. अभी Belgium also said कि they are away from Netherlands. वो अपने आप को अलग करना चाहते थे नीदरलैंड से. Got it? So here you can see how the revolution was sparking off. All these things were happening. In the meantime, what happened? A big incident had happened, जिसमें कि there was the nationalistic feeling amongst the educated elite across the Europe. It was the सारे लोगों को इस चीज ने, इस इंसिडेंट ने बहुत इंस्पायर किया. The people all over Europe were very inspired by this big incident that had happened here. वो क्या था? It was the Greek War of Independence. Greek War of Independence was there. Greece was a part of Ottoman Empire since the 15th century. ये तो आपको पता है. Ottoman Empire had captured Greece. Actually, Greece is a European nation. Greece is a European country. लेकिन Ottoman Empire ने उसके ऊपर कब्जा किया हुआ था. So, Ottoman Empire had captured Greece since 15th century. It's a Christian country, it's a European nation, इनके यहाँ का customs traditions अलग है, लेकिन Ottoman Empire had captured that place and they were trying to establish themselves. The Ottoman Empire tried to establish themselves as the rulers in Greece. Greek के लोगों को अच्छा नहीं लगा. They did not like it. Okay, so revolutionary nationalists that was sparking up. Europe it was coming up, very, very fast. Independence amongst the Greek, which began in 1824. 1820, sorry, not in 1824. In 1821, the Greeks, they started this movement. ठीक है? They said कि they did not want to be a part of Ottoman Empire की तानाशाही को क्यों सहेंगे? Why will they tolerate the things and the incidents that were happening in Ottoman Empire? कौन है वो लोग? Got it? So the Greeks started the War of Independence. इंडिपेंडेंस के लिए वो ये वॉर शुरू हो गया. And nationalists, they got, abhi Greek people have started it. There were many Greek people living in the other parts of Europe also. Many Greeks who have settled in other parts of Europe, they were also supporting these Greeks. ये भी इनको सपोर्ट कर रहे थे. And nationalist people, when they got sympathies for ancient Greece and culture, Western Europeans also said that Greece is the cradle of civilization. The civilization that had started, whatever is existing in all parts of the world, usme Greeks have played a very important role. So for this, the English poet, Lord Byron, lot of people were contributing for the Greek independence. They said that Greece needs to be independent. As a result, Greeks living in other parts of Europe started
supporting this movement. इस मूवमेंट को ये लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे. They were supporting the other Greeks living in the exile, and from other Western European people were also supporting. Poets were there, artists were there. They lauded Greece. Lauded मतलब बहुत उन्होंने बखान किया, पूरी दुनिया को बताया कि Greece is the cradle of European civilization. So poets and artists लॉडेड मीन्स किसी चीज के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना. बढ़ा चढ़ा के नहीं, मतलब कि टू टॉक वेरी गुड अबाउट समथिंग. लॉडेड द ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में पूरी दुनिया को उन्होंने बताया. And mobilize the public opinion to support its struggle against Muslim empire. इन्होंने कहा कि Muslims have captured Greece, which is not correct. Greece belongs to the Christian people who were living in that area from a very long time. काफी लंबे समय से वो लोग वहां रह रहे हैं. Okay, as a result, the English poet, नाम दिया हुआ है, आप याद रखिएगा इसको, लॉर्ड बायरन. व्हाट इट, यू नीड टू मेंशन अबाउट लॉर्ड बायरन. इन्होंने क्या किया? ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर. ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड लेटर वेंट टू पार्टिसिपेट in the war. वॉर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जहां पे कि ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824. अब फाइनली क्या हुआ? ही डाइड इन 1824. अब सोचो आप, स्ट्रगल इसी तरह से चल रहा है. फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज साइंड इन 1832, जिसमें कि ग्रीस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन. इसका रिजल्ट क्या हुआ? यही लिख देती हूं, इट इज द सेम थिंग. ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज साइंड. कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज साइंड in 1832. ये ईयर आपको याद रखना है, ठीक है? It was signed in 1832 and Greece was declared as an independent nation. Greece declared its independence. They said कि they are no more a part of the Ottoman Empire. Ottoman Empire के साथ रहने के लिए इन्होंने मना कर दिया. They separated themselves. So please remember the Treaty of Constantinople that was signed in 1832. ये देखो, revolutionary age is going on, revolutions were being carried on, some people have played very important part. कुछ लोगों का नाम आ जाता है, कुछ लोगों का नाम नहीं आता है, but then all the people who have contributed in these kind of struggles, they are important. उन सारे लोगों का नाम हमको पता होना चाहिए. We should know about them. Okay, now this age of revolutions had started, लेकिन in age of revolutions some people have played a very important part. कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा इसमें important part play किया. वो लोग कौन थे? There was the feeling of romantic imagination. ठीक है? The romantic imagination, and there was the national feeling and national feeling.
डेवलपमेंट हैड हैपेंड ऑफ नेशनलिज्म। इस ये थ्रू वॉर से नहीं हुआ या टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं हुआ। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन। कल्चर played an important role in creating the idea of a nation। ये किस कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है? प्लीज अंडरस्टैंड, मेनी पीपल हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। खाली इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। खाली वॉर में कूद जाना एंड इट्स नॉट ऑलवेज द स्ट्रगल और द बैटल विथ वेपन्स। वी कैन ऑल्सो फाइट विदाउट वेपन्स। यस, कैसे मैं ये कह रही हूँ? कम ऑन, गांधी जी का एग्जाम्पल ले लो। पूरे स्ट्रगल था एंड नॉन वायलेंस था, एक हथियार किसी ने नहीं उठाया। Nobody has picked up a weapon. He is an example to the other parts of the world. पूरी दुनिया को ये एग्जाम्पल देके गए हैं। एंड इसमें कल्चर प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि आइडिया ऑफ नेशन वॉज बीइंग क्रिएटेड। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस द एंड शेप nationalistic feeling. Nationalistic feeling gradually and slowly was increasing. So art and poetry, ठीक है, stories and music played an important part। बहुत, ये सारी चीजें मिलके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी इन राइजिंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। हमको इस आर्ट के बारे में पढ़ना है, इस पोइट्री के बारे में पढ़ना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज एस्पेक्ट्स इन डिटेल। जैसे कि देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ, एक वर्ड है यहाँ पे विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली, एंड दैट वॉज देयर वॉज अ फीलिंग ऑफ रोमांटिसिज्म। What was romanticism? A romantic feeling. When you love someone, आप जब किसी को दिल से चाहते हो, when you are deeply in love with someone, बहुत ज्यादा दिल से अगर आप किसी को चाहते हो तो इस तरह की फीलिंग आती है। एंड दिस वॉज नॉट टूवर्ड्स अ बॉय और अ गर्ल, इट वॉज योर फीलिंग टूवर्ड्स योर नेशन, टूवर्ड्स योर कंट्री। इट वॉज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, a particular form of nationalist sentiment जिसमें आप अपनी जान भी दे देना चाहते हैं अपनी कंट्री के लिए। रोमांटिक आर्टिस्ट, poets, they criticize the glorification of reason and science। उन्होंने कहा क्या इतनी हम साइंस की बात करते हैं, why do we talk so much about science? So romantic artists, इन्होंने क्रिटिसाइज किया। एक्चुअली these romantic artists, they criticized the glorification, artists criticized the glorification of art and science, of reason and science। रीजन मतलब हर चीज में हम रीजन खोजते हैं ना। What has happened, when has happened, how it has happened, why did it happen, that is what is called as reason and science। इन्होंने पूरी चीजों को हर एक तरीके से क्रिटिसाइज किया। रीजनिंग क्या है, साइंस क्या है। नाउ व्हाट हैपेंड, एंड रीजनिंग को अगर हम हटा देंगे तो क्या बचेगा?
They focused on emotions, intuition, and एक अलग तरीके की feeling होती है. You know, romanticism is a different type of a feeling altogether. Got it? So they focused on intuition, okay, intuition, emotions, and mystical feeling. Emotions and mystical feeling. Romantic artists who were there, they were trying to bring up a different kind of an emotion amongst the common people. जैसे कि रोमांटिक आर्टिस्ट वेयर देयर लाइक, हम किसके बारे में, अलग अलग आर्टिस्ट के बारे में पढ़ेंगे. वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंट्यूशन. इंट्यूशन होता है ना कि अरे कुछ अच्छा होने वाला है, अरे कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है. एंड यू नो दिस इंट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अपार्ट फ्रॉम द व्हाट वी आर स्टडीइंग कि व्हाट यू थिंक इज व्हाट हैपन्स. कितनी बार क्या होता है, आप जो सोच रहे हो उससे बिल्कुल अलग कुछ हो जाता है. So your intuition that are there, your feelings that are there, your thought process that is there, that has a lot of impact on your lives. So this intuition played a very important role. Mystical feeling was there, and they wanted to bring a sense of collective heritage. सबको साथ में मिलके आना है. A common culture passed as the basis of a nation. तुम भी सेम देश के, एक ही देश के तुम भी वासी, हम भी एक ही देश के वासी हैं. तो दिस काइंड ऑफ अ सेंटिमेंटल फीलिंग, दिस काइंड ऑफ अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग वाज समथिंग दैट वाज वेरी यूनिक. बहुत ही अलग तरीके की ये एक चीज थी. अब रोमांटिक आर्टिस्ट वेयर देयर, जैसे कि जर्मन फिलोसोफर थे जोहान गॉटफ्राइड. रोमांटिक इमेजिनेशन दैट इज गोइंग ऑन, इसमें वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट किन लोगों, ऐसे कौन लोग थे हु विल रियली हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर फीलिंग ऑफ nationalism and feeling of sentiments towards your country. You start feeling. तो इसमें one person who has played a very important role, German philosopher Johann Gottfried Herder. इन लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है. द गॉटफ्राइड हर्डर 1744 to 1803. 1744 to 1803. They claimed कि ट्रू जर्मन कल्चर कैसे आएगा. द ट्रू जर्मन कल्चर कैन बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल. आम आदमी के अंदर में एक देयर हैज टू बी अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड अ फीलिंग ऑफ डेडिकेशन टुवर्ड्स द कंट्री. तो जर्मन कल्चर, आपको अपने कल्चर के लिए बहुत रेस्पेक्ट होना चाहिए ना. यू शुड ऑलवेज हैव रेस्पेक्ट. आप जो खाते हैं, आप जो पहनते हैं, लोग उसी चीज का मजाक उड़ाते हैं. हाँ, देखो क्या खा रहा है, अरे ये देखो क्या पहना हुआ है. नो, ऑलवेज फील वेरी प्राउड. दिस इज माई कल्चर. मैं ऐसे ही कपड़े पहनता हूँ, ऐसे ही खाने खाता हूँ, क्योंकि मेरे एरिया में इन माई कल्चर, इन माई कस्टम्स, दिस इज वॉट इज द फूड आई ईट, दिस इज वॉट इज द ट्रेडिशन आई फॉलो. जर्मन कल्चर, it was to be discovered among the common people. Was to be discovered among common people. Common people को क्या कहते थे? Common people, and common people were called as das Volk. We'll be carrying on in the next. एक picture दिखानी है आपको. I wanted to show you one figure. Let me show it to you. Students, actually this is the topic that we have started today, and here we are talking about the age of revolutions. What I wanted to show you is this picture. Look at this picture. Got it? A famous picture
दैट वॉज मेड बाय अ पेंटर जिन्होंने कि रेवोल्यूशन के बाद का the artist had tried to show the picture through this picture the age of revolution. This has been made by the French painter Delacroix. Okay, it was the massacre at Chios. Eugene Delacroix. Delacroix is a painter from France, most important French romantic painter. Look at his painting, huge painting, 4.19 meter to 3.50 4.19 meter by 3.54 meter. He depicts an incident in which 20,000 Greeks have been killed by Turks. ऑटोमैन एम्पायर बहुत नाराज़ हो रहे थे ना, किस तरह से ग्रीक्स को यहाँ पे मारा गया है, यही दिखाया गया है. इन्होंने इस चीज़ के थ्रू ये ड्रामेटाइज करने की कोशिश की है जहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ women एंड चिल्ड्रन हैड बीन शोन एंड डिफरेंट कलर्स हैव बीन यूज्ड. डेलाक्रॉइस वांटेड टू अपील टू द इमोशंस ऑफ स्पेक्टेटर्स कि ग्रीक्स ने कितनी परेशानियों का सामना किया है, वो अपनी पेंटिंग यही बताना चाहते थे. गॉट इट? This is what I wanted to show. Okay children, thank you so much and all the best to you.